कैलिफोर्निया, जो अपनी अद्भुत सुंदरता और जीवंत शहरों के लिए जाना जाता है, एक बढ़ते संकट का सामना कर रहा है। जंगल की आग। ये भयंकर आगजनी, जो कभी मौसमी घटना थी, अब अधिक बार, अधिक तीव्र और अधिक विनाशकारी होती जा रही है। ऊंची लपटों के पूरे पड़ोस को निगलते हुए, मोटे धुएं से आसमान को ढकते हुए और अपने घरों से भागते हुए परिवारों की तस्वीरें अब बहुत आम हो गई हैं। गोल्डन स्टेट ने हमेशा जंगल की आग का अनुभव किया है, लेकिन कुछ बदल गया है। ये आग अब अधिक गर्म, तेज और लंबी जल रही है, जो जलवायु परिवर्तन, सूखे और मानव गतिविधियों के खतरनाक संयोजन से भड़क रही है। ये मेगा फायर कैलिफोर्निया के परिदृश्य को बदल रहे हैं और इसके लोगों, पर्यावरण और जीवन के तरीके के लिए अस्तित्वगत खतरा पैदा कर रहे हैं। इसके परिणाम दूरगामी हैं, जो वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से लेकर अर्थव्यवस्था और राज्य के प्रतिष्ठित पर्यटन उद्योग तक सब कुछ प्रभावित कर रहे हैं। कैलिफोर्निया बदलते जलवायु की अग्रिम पंक्ति में है और जंगल की आग के खिलाफ लड़ाई इस प्रिय राज्य के भविष्य के लिए एक संघर्ष है। वर्तमान जंगल की आग के संकट को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आग हमेशा कैलिफोर्निया की पारिस्थितिकी का एक अभिन्न हिस्सा रही है। सदियों से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली जंगल की आग अक्सर बिजली के कारण राज्य के जंगलों और घास के मैदानों के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। ये आग आमतौर पर छोटी और प्रबंधनीय होती थी, मृत वनस्पति को साफ करने, नए विकास के लिए जगह बनाने और मिट्टी में पोषक तत्वों को वापस लाने में मदद करती थीं। देशी पौधे इन आवधिक आगों का सामना करने और यहां तक कि उनसे लाभ उठाने के लिए विकसित हुए थे। कुछ प्रजातियां, जैसे कि विशाल सेक्वोया, अपनी बीजों को छोड़ने और पुनर्जन्म के लिए आग पर निर्भर करती हैं। स्वदेशी समुदायों ने भी आग के महत्व को समझा, भूमि का प्रबंधन करने और बड़ी, अधिक विनाशकारी जंगल की आग को रोकने के लिए नियंत्रित जलाने का उपयोग किया। हालांकि आग और पारिस्थितिकी के बीच नाजुक संतुलन हाल के दशकों में बिगड़ गया है। मानव कारण जलवायु परिवर्तन और एक सदी की आग दमन नीतियों के संयोजन ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां जंगल की आग तेजी से मेगा फायर में बदल सकती है, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन कैलिफोर्निया में जंगल की आग के संकट को बढ़ा रहा है। राज्य पहले से कहीं अधिक गर्म, सूखे हालातों का सामना कर रहा है, जो जंगलों और घास के मैदानों को अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन में बदल रहे हैं। 19वीं सदी के अंत से कैलिफोर्निया में औसत तापमान लगभग 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है और वैज्ञानिक भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले दशकों में तापमान बढ़ता रहेगा। यह तापमान वृद्धि अधिक बार और गंभीर सूखे की ओर ले जा रही है, जिसमें कम वर्षा और सिएरा नेवादा पहाड़ों में कम बर्फबारी हो रही है, जो राज्य के जल आपूर्ति का बहुत हिस्सा प्रदान करते हैं। शुष्क हालात मजबूत हवाओं से और भी बढ़ जाते हैं, जो जल्दी से अंगारों को फैला सकते हैं और छोटी आग को भयंकर आग में बदल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन आक्रामक पौधों की प्रजातियों के प्रसार में भी योगदान दे रहा है, जो प्रभावित क्षेत्रों में पनपते हैं और जंगल की आग के लिए अतिरिक्त ईंधन प्रदान करते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता रहेगा और सूखे अधिक सामान्य होते जाएंगे, विनाशकारी जंगल की आग का खतरा केवल बढ़ेगा। कैलिफोर्निया के जंगल की आग के संकट के विनाशकारी परिणाम हाल के वर्षों में प्रभावित हुए लाखों निवासियों के लिए बहुत वास्तविक हैं। 2020 की जंगल की आग का मौसम सबसे विनाशकारी था, जिसमें 4.2 मिलियन से अधिक एकड़ जल गए, जो पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर गए। 2018 में कैंप फायर कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे घातक और विनाशकारी जंगल की आग थी, जिसमें 85 लोग मारे गए और पैराडाइज शहर में लगभग 19,000 संरचनाएं नष्ट हो गईं। 2018 में मेंडोसिनो कॉम्प्लेक्स फायर, जो उस समय राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी जंगल की आग थी, ने 4,59,000 एकड़ से अधिक जला दिया। ये मेगा फायर अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। 2021 में डिक्सी फायर कैलिफोर्निया के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी आग बन गई, जिसमें 9,63,000 एकड़ से अधिक जल गए। 2021 में कैलडोर फायर ने लेक ताहो बेसिन को खतरे में डाल दिया और पूरे साउथ लेक ताहो शहर को खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। इन आगों ने समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव डाला है, परिवारों को विस्थापित किया, घरों और व्यवसायों को नष्ट कर दिया
और भावनात्मक और आर्थिक विनाश का निशान छोड़ दिया है। Section 5. The perfect firestorm. Why wildfires are worsening. The factors contributing to California's worsening wildfire crisis are complex and interconnected. Climate change provides the backdrop, creating hotter, drier conditions that make vegetation more flammable and increase the likelihood of ignition. However, other factors are also playing a significant role. Decades of fire suppression policies, while well-intentioned, have led to a buildup of dead vegetation in forests, creating a tinderbox-like environment. This fuel accumulation means that when fires do start, they burn hotter, faster, and higher, making them more difficult to control. The expansion of human development into wildland areas, known as the wildland-urban interface, is another contributing factor. As more people build homes in fire-prone areas, the risk of wildfire damage and loss of life increases. Human activities, such as downed power lines, campfires, and even arson, are responsible for igniting many wildfires. In fact, it is estimated that 90% of wildfires in California are human-caused. Section 6. On the front lines, the battle against wildfires. California's firefighters are on the front lines of the wildfire crisis, risking their lives to protect communities and contain these increasingly dangerous blazes. These brave men and women work tirelessly, often in extreme conditions, to suppress fires, protect structures, and evacuate residents. However, the increasing frequency and intensity of wildfires are putting a strain on firefighting resources. Fire seasons are becoming longer, and firefighters are being deployed for longer periods, leading to exhaustion and burnout. The cost of fighting wildfires is also skyrocketing, putting a strain on state and federal budgets. Despite these challenges, California's firefighters are using innovative techniques and technologies to battle these infernos. Air tankers drop fire retardant to slow the spread of flames, while helicopters conduct water drops. Firefighters are also using prescribed burns to reduce fuel loads and restore the natural fire balance in forests. Section 7. Beyond the flames, the devastating impact. The impact of California's wildfires extends far beyond the burned areas. The smoke and particulate matter released from these fires can travel hundreds of miles, affecting air quality and public health across the state and beyond. Wildfire smoke contains a dangerous mix of pollutants, including carbon monoxide, nitrogen oxides, and particulate matter. These pollutants can irritate the lungs, trigger asthma attacks, and exacerbate other respiratory problems. Studies have shown that exposure to wildfire smoke can increase the risk of heart attacks, strokes, and even premature death. Wildfires also have a significant impact on the environment. They release large amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere, contributing to climate change. Fires can also damage watersheds, pollute rivers and streams, and harm wildlife habitat. Section 8. Living with fire. Preparing for a new reality. As California grapples with the growing threat of wildfires, it is clear that the state must adapt to a new reality. Living with fire requires a multifaceted approach that includes reducing greenhouse gas emissions to combat climate change, improving forest management practices, and hardening communities against wildfire. Reducing greenhouse gas emissions is essential to slowing the rate of climate change and mitigating the factors that are fueling more extreme wildfires. This will require a transition to clean energy sources, increased energy efficiency, and a reduction in fossil fuel consumption. Improving forest management practices is crucial to reducing the risk of catastrophic wildfires. This includes thinning overgrown forests, conducting prescribed burns to reduce fuel loads, and restoring natural fire regimes. Homeowners can also take steps to create defensible space around their properties by clearing vegetation and using fire-resistant materials. Section 9. A call to action. Protecting our Golden State. The wildfire crisis in California is a stark reminder of the urgent need for action on climate change. The state is on the front lines of a global crisis, and the decisions made today will have far-reaching consequences for generations to come. Addressing this crisis will require a collective effort from individuals, communities, and governments at all levels. Individuals can make a difference by reducing their carbon footprint, supporting policies that promote clean energy and climate action, and preparing their homes and families for wildfire.
Communities can work together to develop community wildfire protection plans, harden critical infrastructure, and create defensible space around homes and businesses. Governments must prioritize investments in wildfire prevention, mitigation, and response, as well as policies that address the root causes of climate change. The future of California depends on our collective action. By working together, we can protect our communities, our environment, and our way of life from the growing threat of wildfires.